Now, students, next topic is type of communication. Communication is divided into two types based on channels and based on purpose. On the basis of channels, the communication is again divided into three types: verbal communication, non-verbal communication, and visual communication. Now, verbal communication again divided into two types: oral communication and written communication. On the basis of purpose, communication is divided into two parts: formal communication and informal communication. Now, formal communication divided into three types: vertical communication, horizontal communication, and diagonal communication. We will discuss each type one by one. Now, first type is verbal communication. Students, verbal communication is a type of oral communication in which we use sound and words to express ourselves. वर्बल कम्युनिकेशन एक ओरल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम साउंड्स एंड वर्ड्स का यूज करते हैं. सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज verbal communication is a type of oral communication wherein the message is conveyed through spoken words. The sender may communicate in the form of speeches, discussion, presentation and conversation. Verbal communication में sender communicate करने के लिए speeches, discussion, presentation और conversation का use करता है. Now, there are two types of verbal communication: oral communication and written communication. Now, next is advantages of verbal communication. The verbal communication offers many advantages. First advantage is conveying messages in easy and quick. Verbal communication का सबसे पहला advantage है आपको मैसेज easy और quickly मिल जाता है. Student, as we all are know, verbal communication is oral communication. ओरल कम्युनिकेशन में जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है तो वो क्विकली कन्वे हो जाती है और आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है. सेकेंड एडवांटेज इज इट इज चीपर वे ऑफ कम्युनिकेशन. इट सेव्स मनी. आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो काफी क्या होता है, चीपर होता है, जिससे इट सेव्स मनी. नाउ थर्ड इज the response you get from the audience is quick and immediate. verbal communication oral communication होता है. जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो ऑडियंस आपको क्विक और इमीडिएट आपके इंफॉर्मेशन या जो आपको रिस्पॉन्स है वो दे देती है. Few more advantages of verbal communication. It promotes a secure exchange of data. It can have a powerful effect on listeners. Now next is disadvantages of verbal communication. First, it has no legal validity. Second, it is not suitable for lengthy messages. Next, if we use confusing and complicated words, it may be difficult to comprehend it. आप सभी को पता है वर्बल कम्युनिकेशन ओरल होता है. अगर हम डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर लेते हैं तो
जो आपका रिसीवर रहता है उसको आपके मैसेजेस या इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ पाते. इट इज दैट्स ऑल अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ we will discuss about non-verbal communication. Non-verbal communication is the process of sending and receiving messages without using words. Students, non-verbal communication में हम मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं. हम मैसेज को सेंड करने के लिए वी यूज बॉडी लैंग्वेज, facial expressions, hand movement, gestures and general behavior का use करते हैं. So, the exact definition of non-verbal communication is the process of sending and receiving messages without using words. Now, advantages of non-verbal communication. The non-verbal communication offers these advantages. First, time is not wasted in the non-verbal communication. जब आप non-verbal communication करते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आप non-verbal communication, gestures, facial expression इनकी हेल्प से करते हैं. Next, illiterate people can pick up a non-verbal because the message are conveyed through expression and the body language. जो भी illiterate people होते हैं वो non-verbal communication के थ्रू मैसेज को easily क्या कर लेते हैं, कन्वे कर लेते हैं, क्योंकि आप non-verbal का यूज करते हुए आप gestures, postures, मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा देते हैं. Now, like other form of communication, the non-verbal communication also has some disadvantages. First disadvantage of non-verbal communication is long and detailed message cannot be communicated non-verbally. It might be difficult for some people to understand. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन में मैसेजेस को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ पीपल के लिए. Now students, that's all for today's session. I hope you like today's class. You have any doubt and query, ask me.